Assalamu alaikum students, hopefully you all are doing great in your life. Welcome to QC Learning Hub. Welcome in Java also. Today our topic about that control statements. I have already discussed about what is Java and Java programming and how to write a basic program in Java by using IntelliJ IDEA. So let's start it our topic, control statements. So there are three types of control statements in programming actually we have used. First is conditional statements, second is iteration statements, and third one is jump statements. So first thing is that conditional statements. We all know about very carefully about that topic. If else, nested if, switch cases, and simple if else if, these all also included in conditional statements. So second is iteration statement, while, do while, for, nested loop, and third jump statements, break, like continue, like return. These are also the part of jump statement. So first our topic we will cover conditional statements. So let's start it, and we have to close this, and I have already opened IntelliJ IDEA. So how you can open files in IntelliJ IDEA? First you move on file and you choose new project. You can choose any name. I'm written conditional statements. Okay, conditional statements. I have choose this name, and now the create. I want to create this window or new window. I want to create this on this window. And now your conditional statement project is open. Now you can move that source, which is main file. You can click on new, because we have already first created packages in Java. Now click on Java packages. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जब भी हम पैकेजेस का नेम लिखते हैं तो उससे पहले हमने लिखना होता है कॉम डॉट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं जावा में जैसे कि डिफरेंट डायरेक्टरीज होती हैं, लाइब्रेरी के अंदर एक पूरी कवर्ड होती है, उसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस बने होते हैं, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, पीएस है, कंप्यूटर है, मल्टीपल बॉक्सेस के लिए जो है ना बुक्स हम स्टोर करने के लिए रखते हैं, तो वो पोर्शंस बनाए जाते हैं। तो इसी तरह ही हम यहाँ पे जावा के अंदर पैकेजेस क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम छोटे छोटे पोर्शन बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे उस पैकेज का नाम जो इसी के अंदर सिक्योर रहेगा उसको हमने हमेशा याद रखिएगा, लिखना है कॉम डॉट, जो भी आपने पैकेज का नाम लिखना है वो आप राइट कर लें, कॉम डॉट conditional. Okay, now you can click on main file. अब यहाँ पे हमने एक पैकेज क्रिएट कर लिया है कॉम डॉट कंडीशनल के नाम से, ठीक है। हम उसके अंदर आ गए हैं मेन फाइल। हमारी मेन फाइल के अंदर ये भी याद रखिएगा, जिस भी फाइल का नाम आपने चूज़ करना है वही आपकी क्लास का नेम होगा। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पे एम स्मॉल लिख देती हूँ तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एरर आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी क्लास की फ़ाइल का नेम होता है, जो भी हमने अपनी फ़ाइल क्रिएट की है उसी नाम से आपकी क्लास जो है वो जनरेट होगी। मैं बात करने लगी हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो जिसके अंदर फर्दर आ जाती हैं आपके पास स्टेटमेंट्स आती हैं 3 टाइप्स, जिसमें आपके
इफ़ होती है, जिसमें ऐसे हम इफ़ लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस आती हैं, देन इसके अंदर हम क्या मेंशन करते हैं, कंडीशन मेंशन करते हैं, एंड देन हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, और whether you can write statements इसमें वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी जो कि ट्रू होगी. स्टेटमेंट शुड बी